Hello and welcome to Bottom Line. Well, the Election Commission of India today announced the dates for 5 poll-bound states, including Assam. Assam, of course, is going to polls on the 27th of March. The polling will be held in 3 phases. First phase on March 27th, second on April 1st, and the last and final phase on the 6th of April. With this, the countdown for the all crucial polls in Assam begins. Parties are gearing up and we will take views from the various party spokespersons, party leaders tonight on whether they were in a way taken by surprise, because it was expected that the polling, even the first phase, will be held in April. But now what we have is that polling ending much ahead of Bihu. Earlier speculations were arrived that one phase, while it may be a 3-phase polling, one phase may be held after Bihu. But what we get today is that polling will end well ahead of Bihu on the 6th of April. So where do parties stand after the declaration, the announcement of the all-important crucial Assam election dates today? To discuss this and much more, I'm being joined by BJP spokesperson Pramod Swami from Guwahati. Welcome, Mr. Swami, to Bottom Line. I'm also being joined by AIUDF leader Mohiuddin Siddique, and in the studios I have with me NETRARANJAN Chaudhary of the Congress. Thank you, gentlemen, for joining me on Bottom Line. Pramod Swami ji, काफ़ी जो है जल्दी हो रही है इलेक्शन. ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि बिहू के बाद भी एक फेज़ हो सकता है, बट अप्रैल 6 तक ख़त्म हो रही है. बीजेपी जो है कैंपेनिंग बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी. वी हैव द पीएम, HM, इंडियन होम मिनिस्टर मेकिंग फ्रीक्वेंट विजिट्स. सो क्लियरली द मोमेंटम जो है काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे यहाँ पे, बट लग रहा है कि बीजेपी के साथ है. देखिए, डबल ए का मतलब एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी एंड अचीवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. इसको लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं. और हमारी जो असम के जो अध्यक्ष है बीजेपी के श्री रंजीत कुमार दास जी, उन्होंने संगठन को पृष्ठा प्रमुख तक लेकर के चले गए हैं. माने एक पेज का भी, जो वोटर लिस्ट का एक पेज होता है, उसका भी हमने एक प्रमुख बना दिया. और आज मैंने पश्चिम गुवाहाटी में जो पृष्ठा प्रमुख की एक बैठक, एक सभा को मैंने संबोधित भी किया. तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इस बात को लेकर करके कि चुनाव आयोग ने जो 3 चरणों में चुनाव की घोषणा की है, उसकी तैयारी हमारी पार्टी बहुत पहले से कर रही है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं. और हम हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जो विभिन्न विकासमूलक कार्य किए, जैसे 60 सालों में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मात्र 4.5 सालों में हम 9 मेडिकल कॉलेज और एम्स ये जनता को देने जा रहे हैं. तो ये हमारी जो उपलब्धियां हैं, 20,000 किलोमीटर हमने सड़क का निर्माण किया है, करीब 34,000 करोड़ रुपए इसी बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने. नहीं, हम आएंगे उसमें, बट आप जो पहला सवाल है कि ये जो मार्च 27 का डेट है, क्या बीजेपी ऑल गियर्ड अप है, ऑल सेट है फॉर दैट डेट? आर यू हैप्पी विद द डेट्स? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इन कंट्रोल, इट्स द इलेक्शन कमीशन व्हिच टेक्स द डिसीजन, बट एज अ पार्टी क्या आप सेट है कि हाँ जितनी जल्दी हो, जो मोमेंटम चल रहा है कैंपेनिंग की, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा बीजेपी के लिए? क्या ऐसा है? नहीं, हमारी तैयारियां पहले से थी. हम पहले से तैयारी कर रहे थे. चुनाव आयोग ने जो तिथि घोषित की है, उसका हम स्वागत करते हैं. और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में बड़ी शिद्दत के साथ उतरेगा और हम अच्छी सफलता हासिल करेंगे. 100+ का जो हमारा लक्ष्य हमने रखा है, उसको हम हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. Mr. Chaudhary, the poll dates are here, the countdown has begun, and we have less than a month. We have less than a month to go for the elections. Now, many here would like to believe, many in the state would like to believe that the Congress AIUDF campaign has not even picked pace till now. So are you prepared for this very big, crucial battle with a visibly formidable BJP and allies? Well, coming to your questions, to the point, well, it's good that today the Election Commission has declared the election dates. So we are absolutely ready with whatever dates they are providing.
It might be to the BJP's advantage or whatever, it's up to them. But we were mentally ready to have the election at any day. We are preparing really hard for this. Our cadres are really motivated. And if you can see the recent Assam BJP, the sort of response they are getting, the sort of connectivity we are having with the public, the response we are getting from the voters, the warmth and affections and genuine concerns they are expressing is actually amazing. We are actually overwhelmed. So we are pretty much confident, and believe me, you are saying that the AIUDF and Congress campaign doesn't seem to be like this. So actually we are not doing any jhumlas, we are not doing any marketing things, but on ground level with voters we are well connected to, and we are pretty much confident of excellent outcome from this election. So we are very much excited about this declaration of the date. Congress excited about the election days. Mohiuddin Siddique, how prepared do you think is the Grand Alliance for the March 27 polls? Yes, actually, election date has been declared as it is expected here, and we did expect the declaration almost in these days. So there was a preparation since long, and from the beginning of car movement and the situation take place in the state, and since then there was a preparation to oust the ruling force from the party from power. So need not to say that the opposition party are quite organized and quite confident. So with this declaration, we are very much happy that as soon as possible, the people will get a new government in the state and will be free from all anxieties the present government is giving. प्रमोद स्वामी जी, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं एआईयूडीएफ और कांग्रेस, कह रहे हैं जितनी जल्दी हो चुनाव उतना अच्छा, स्टेट को छुटकारा मिले बीजेपी सरकार से। कांग्रेस जो, और एक बात जो कांग्रेस कह रही है पिछले कुछ दिनों से कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, स्टार कैंपेनर हैं, बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड जेपी नड्डा, शाह और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने फ्रीक्वेंटली इसलिए आ रहे हैं आसाम कि दे आर वरिड, द पार्टी इज नर्वस। ये जो एक नैरेटिव है कांग्रेस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है पिछले कुछ दिनों से, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस का एक विपक्षी दल होने के नाते उनका अधिकार है कि वो जबरदस्त तरीके से वो चुनाव लड़े, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन हमने जो काम किया है आसाम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ विभिन्न डेवलपमेंट के लिए, जैसे 13 फाइनेंस कमीशन में जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने 79,741 करोड़ आसाम को अलॉट किए थे। 14 फाइनेंस कमीशन में मोदी जी ने 1,55,292 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो 60 सालों में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज और 4.5 सालों में करीब 9 मेडिकल कॉलेज और एम्स और 20,000 किलोमीटर का रास्ता का निर्माण। तो जो डेवलपमेंट का जो हमने काम किया है उस पर हम बहुत कॉन्फिडेंट है, और हमारे पास पे एक टीम है जो बहुत सशक्त टीम है, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में, और हमारा संगठन भी काफी मजबूत है। और हमारे पास जो नेशनल टीम है श्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस कह रहा है कि आप बीजेपी नर्वस है इसलिए जो सबसे बड़े नेता हैं वो हर हफ्ते आ रहे हैं 2 बार। देखिए, वो देश के नहीं, वो पूरे विश्व के बड़े नेताओं में से एक है, और वो हमारा एसेट्स है, तो हम उसको वो जरूर आसाम में आ रहे हैं। और आप सिर्फ चुनाव बोल के नहीं, आप देखिए पहले की जो सरकारें थी उस समय यहाँ के नेताओं को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज सोच में बदलाव आया है, नीति में बदलाव आया है, नेतृत्व में बदलाव आया है, इसलिए नीति भी बदली है। आज हर हफ्ते एक मंत्री जो है वो आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में आता है और यहाँ की समस्याओं को समझ करके समाधान का प्रयास करता है। लेकिन पहले ये हमें देखना नहीं पड़ता था। पहले यहाँ कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के जाते थे और 4-5 दिन तक उनको बैठना पड़ता था मैडम के दरवाजे पर, उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। तो ये नई नीति है, नया नेतृत्व है, और ये नया भारत है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आसाम
आसाम में जो हमने श्री सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जो काम किए हैं, उसका जनता हमें भरपूर समर्थन देगी। और राजनीति है, राजनीति में बोलने वाले हजार बात बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन होता है वो जनता का होता है, और जनता जो भी निर्णय लेगी वो हमें मान्य है। और आप देखिए 2016 के बाद 2019 के चुनाव में 2014 में हमारे 7 एमपी थे, 2019 में हमारे 9 एमपी हुए। विभिन्न जो काउंसिल के चुनाव, ऑटोनॉमी काउंसिल के चुनाव, उनमें सब में हमने सफलता प्राप्त की। अगर अपोजिशन के पास कोई नीति होती, कोई नेतृत्व होता, कोई विजन होता, तो उनको भी उन चुनाव में सफलता मिलती। तो जनता तो इनको रिजेक्ट कर चुकी है। यह भी अब सिर्फ टीवी नेता बन चुके हैं, टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे इनका कोई बेसर रहा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। Yeah, you want to make a point? Okay, so well, the honorable BJP representative has made a lot of arguments. If you see, not only in this show, across different channels in last couple of weeks, across different media spokespersons narrative, BJP this time is not having any definite narrative. That is where they are definitely lagging. And anybody can definitely well, find the out. Prime Minister has visited Yes. twice and he's talking development. No, How see, can you say I'm that BJP coming. doesn't have a narrative No, this no, time? they are not. See, in 2014 or maybe 2016, there was a tremendous expectations from Prime Minister Modi ji, the Vikas Purush, the sort of Gujarat model, the change, Parivartan and all. It really catches to the people's imaginations. But now BJP is really struggling to defend their own promises that they have made. If you see, they are really not having any narrative. They are struggling, they are totally defensive to safeguard their own vision documents, the own promises they are making, and they are somehow diverting from one topic to another and just avoiding the promises made by them. See, let's compare the benchmark. That time you are benchmarking against Congress misrule. Yes, there were lapses. People are not happy with us. There was a anti-incumbency, factor and all. So people are not satisfied and they have voted for you. So benchmark that time was Congress rule and your promises. Now what is the benchmark? Your promises and what you have delivered. Now people will ask you what you promised in 2016 and where we are in terms of price rise, in terms of the very ethnic crisis you have created to the existing of Assam and Assamese peoples. Your promises, you are showing out the Bangladeshis from 16th May. These are all people remember these things. The price rise, even the gas cylinder prices increased twice. Now Prime Minister Modi is their prime, I would say brand mascot. So definitely he is worried. His visit 3 times in a month. It definitely shows that they have lost the confidence on the state leadership. They clearly understood that people are really not happy about the deliverable from the state leadership. So that's why the senior leadership has to intervene. I would say these are all migratory birds. We haven't seen any of these big names when we had issues like Ka, we had floods, we had Baghjan. You had the Prime Minister flying in over 35 times in 5 years. No Prime Minister has ever done that. How can you contest that? What about his deliverable? It's all about he's trying to create a gimmick and he is trying to throw some new promises. Whereas we are asking, what about your previous promises? Where we are about your promises and what is your report card? So BJP should come out with that vision documents report card. I think 476 promises they have made. So I think it's pretty clear. Pramod Swami ji, the Congress spokesperson is saying कि जो ये campaigning है, ये जुमला है और promises पे BJP deliver नहीं कर पाई है, इसलिए जो central leadership है worried है, central leadership worried है, इसलिए यहाँ regular visits हो रहे हैं. देखिए जुमला के आधार पर कोई भी सरकार जो है वो हर चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर सकती. 2014 में हमारे 7 एमपी थे लोकसभा में और 2019 में हमारे 9 एमपी जीत के आए. ये तो का के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ. अगर जनता का हमें समर्थन नहीं मिलता तो हमारे 2 एमपी की संख्या बढ़ क्यों जाती. हमारे तो 7 की बजाय 5 एमपी होने चाहिए थे, 9 एमपी क्यों हो गए. आज कांग्रेस पार्टी के पास साथ अगर जनता है तो हर ऑटोनॉमी काउंसिल के चुनाव में वो पार्टी बुरी तरह क्यों हार रही है. क्यों सिर्फ 2019 के चुनाव में इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ 3 सीटों में सिमट के रह गई.
तो ये सारी बातों का कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2014-15 में आसाम की जीएसटीपी 1,83,798 करोड़ रुपया थी, जो 2019-20 में बढ़ करके 3,51,317 रुपया करीब हो गई। उसी तरह जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2016-17 में 66,330 थी, जो 2019-20 में 90,692 रुपीस हो गई। तो ये डेवलपमेंट का जो काम आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, 19,000 करोड़ रुपया का काम ऑलरेडी चल रहा था, 34,000 करोड़ रुपए और अभी निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए दिए। तो डेवलपमेंट हो रहा है, जनता देख रही है। कांग्रेस के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया, उन्हें दिखाई नहीं देता। गुवाहाटी में देखिए फ्लाईओवर, आज लोग सेल्फी ले रहे हैं, कितने सुंदर फ्लाईओवर है। रात में अगर हम निकलते हैं तो ऐसा लगता है किसी फॉरेन कंट्री में आ चुके हैं। So you are saying very sad. It's very sad that people are taking selfie in flyover and you are fooling people. What about your smart city? Why don't you say about smart city? Where is the twin tower? ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच आपको मुबारक है। मेरा कहने का मतलब है कि आज ये तो अभी भी प्रॉमिस थी ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं आप पार कैपिटा इनकम बता रहे हो, पार कैपिटा अभी कर्ज कितना हुआ है सर जी, ये भी बता दीजिए। सुन लीजिए, बच्चे के ऊपर कितना कर्ज है वो भी थोड़ा बता दीजिए ना फिगर। भाई साहब आप बोलिएगा, कर्ज किसको मिलता है? जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है उसको कर्ज मिलता है, और हमने जो कर्ज लिया है उसके हमारा रीपे करने की हमारी कैपेसिटी है। आप चिंता मत करिए। आज जो रेवेन्यू है वो भी 21% 2019-20 में बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैपेबल गवर्नमेंट है। ये श्री सर्बानंद सोनोवाल और श्री हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में एक कैपेबल गवर्नमेंट है, इसीलिए हमने लोन लिया है, लोन हम रीपे करेंगे। डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होना चाहिए? I want Mohiuddin Siddique to come in here. Mohiuddin Siddique, the AIUDF of course is campaigning. Your party chief Maulana Badruddin Ajmal is campaigning in areas which are the party's stronghold. But overall, if you look at the Grand Alliance, are you satisfied at this moment? We have less than a month to go for the polls. Are you satisfied with the way, say, campaigning is going for your big brother in the Alliance, Congress? How do you look at the entire thing? Do you think it's high time the campaigning needs a push? Maybe along with your party chief, some of the big central leaders of the Congress should also show up. Now see, before going to answer your question, I have to mention one thing here. The spokesperson of BJP said a few minutes earlier that in the previous government or at the time of Congress, the leaders were not listened by the Sonia Gandhi. Yeah, then this was the reality that some leaders were not being listened. But nowadays, under the leadership of Narendra Modi and BJP, people are not being listened. Huge people are agitating against the policies of government, the farmers, the Assamese people, against car, and not a single word were listened by this government. They are talking about the development, but the government, Assam or central government, the both, totally failed to fulfill the aspirations of the people, whatever they have shown in the previous election through their vision document. Whenever we raise the question of vision document as the election manifesto, and they try to divert the issue or divert the thinking, saying that vision documents is a dream, not the promise to the people. And in the vision documents in the last election in Assam, which promises were given to the people of Assam, and major promises the government totally failed to fulfill. For example, Jati Mati Beti, where the Jati Mati Beti have gone, they again impose the car to the state people, saying that the 6th clause will be implemented
and since long it has been hanged. So, in this situation, the state people, the voters, are in a mood to throw this government as soon as possible. And that's why we are very much happy with the declaration of the Election Commission that this is a chance before the people of Assam to oust this anti-people government. And we are trying for this. Pramod Swami, please respond. AIUDF spokesperson का कहना है कि बीट जाति माती भेटी या फिर क्लॉज 6 या फिर कुछ और जो है द बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है उसने आसाम के लोगों को लेट डाउन किया है। देखिए, जहां तक जाति माटी भेटी की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसी सरकार ने जो हमारे खिलंजिया लोग हैं उनको भूमि पट्टा इसी सरकार ने दिया है। इसके पहले सरकारों ने क्यों नहीं दिया है, ये इस बात का जवाब ये नहीं देंगे। आज श्रीमंत अभी जो कल अमित शाह जी आए तो बदरदुरा में जाकर के जिस तरह से उन्होंने आज हमारे जो विभिन्न जो सत्र है उनको जिस तरह से धन का आवंटन हमारी सरकार करने जा रही है, जिस तरह से श्रीमंत शंकरदेव गुरुजन के जो जन्म स्थान है उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में, जिस तरह से पंजाब के पंजाबियों लोगों को स्वर्ण मंदिर पर गर्व है, उसी तरह हम बदरदुआ जो गुरुजन का जन्म स्थान है उसको एक तीर्थ स्थल के रूप में हिस्टोरिकल रूप से उसको हम विकसित करने जा रहे हैं। तो क्या ये संस्कृति को मजबूत करने का कार्य नहीं है? दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी जो है उनके नेता जो स्वर्गीय तरुण गोगोई साहब थे, उन्होंने एक समय कहा था हु इज बदरुद्दीन। आज तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने बदरुद्दीन साहब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है वो हमारे सांस्कृतिक केंद्र जो है हमारा श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में मियां म्यूजियम की बात करते हैं। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी इनकी है? ये अपीजमेंट की आइडियोलॉजी है। और ये जब श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में जब मियां म्यूजियम की बात करते हैं तो इनको जाति माती भेटी से इनको क्या लेना देना है? दूसरी बात, बदरुद्दीन साहब ने तो की पार्टी का जन्म भी आईएमडीटी एक्ट स्क्रैप होने के बाद हुआ था। तो जो पार्टी घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए जिस पार्टी का जन्म हुआ था, आज उसी पार्टी के साथ में जब कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिला लिया है तो उनको तो जाति माटी भेटी की बात कहने का उनको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। और I'll take a response on this. I'll take a response on this. मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। 855 जो शहीद हुए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो ये उत्तर तो जनता उनसे पूछेगी कि आप 30-35 साल शासन में थे। आसाम रिकॉर्ड में 3D थे, डी फॉर डिटेक्ट, डी फॉर डिलीट, डी फॉर डिपोर्ट। आपने प्रथम डी डिटेक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। आप ये बताइए, ए फॉर आसाम तो आप लोग बोल रहे थे, ए फॉर अभी अहमदाबाद कैसे हो गया जी? ए फॉर आसाम बोल रहे थे ना, अष्टलक्ष्मी बोल रहे थे, ईशान कौन बोल रहे थे, क्या हुआ उसका? ये बोलिए। सुनिए, मैं आपका सवाल का जानबूझ के जवाब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आप इसको डाइवर्ट करना चाहते हो। आपको मैं बहुत विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने जो वादे किए थे वो वादे के ऊपर आप टिप्पणी करिए। आप बोलिए 6 क्लॉज को क्या करोगे, आप बोलिए कि हम जो विजन डॉक्यूमेंट लाए थे उस पे बहस करिए। मेरे पास सभी जवाब है, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ आपको बोल रहा हूं कि बात को आप घुमाए नहीं, टू दी पॉइंट में आप जवाब दीजिए। आपके पास उत्तर है या नहीं, या आप कर रहे हो, टू दी पॉइंट बोलिए। आपको उत्तर आसाम की जनता देगी। आप बोलिए ना, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, बस आप बोलिए। 5 साल आप लोगों ने किया ना, कितना प्रोग्रेस हुआ था आपको पूछ रहे हैं। हम तो ओपोजिशन में जी, आप तो रूलिंग पार्टी हो, हम आपको पूछ रहे हैं कितना प्रोग्रेस हुआ। आपने उत्तर दीजिए कि आपने बदरुद्दीन साहब नहीं, आप बोलिए, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप हम तो पूछ रहे हैं ना, बोल दीजिए कितना हुआ है, फिगर बता दीजिए, कितने लोगों को नौकरी दिए बताइए। आप पीडीपी बोलिए, हम ये नहीं बोलेंगे कि पीडीपी के साथ किसने किया था, हम वो सब बहसबाजी में नहीं जाएंगे जानबूझ के। आप उलझा रहे हो, हम समझ गए। हम बोल रहे हैं आप जो हमने पूछा है आप डेवलपमेंट पर ही कृपया बोलिए। उत्तर मांग रही है, आप उत्तर दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है, मान लीजिए। Okay, I will have to go for a very short break here. I'll take Mohiuddin Siddique's response after this very short break, and there's much more on the other side. Welcome back. You're watching Bottom Line. We're discussing the Assam polls. Mohiuddin Siddique, the AIUDF Congress may call the BJP communal,
may accuse the BJP of polarizing, trying to polarize the voters, trying to deviate from the main issues. But at the same time, what we have noticed in the AIUDF's style of campaigning, especially your party chief, Maulana Nabarun Ajmal, clearly what is being witnessed is also a bit to polarize in a way which the BJP says scaring people on religious lines. If the BJP comes to power, people won't be able to keep beards, sport beards or wear a skull cap. So clearly even the AIUDF is in a way guilty of polarizing the voters. And probably when you point fingers at the BJP, you need to look within as well. No, actually, whatever situation created by this present government in the state, in the mind of the minority, there has been always a situation of terror, always a situation of scared of. The minority people are being scared of nowadays in this, and numbers of leaders from BJP, they are trying to always attack the religious sentiment of the minority people, and then after also raising question of this. I don't understand. I don't understand how this is the politics of polarization. Why not the question raised against the ruling force? The numbers of leaders of the ruling party, they are always making such a statement which can make a fair in the mind of minority. Okay, I am going to the another point. The BJP spokesperson here said few minutes earlier that what connection AIUDF is having with Jati Mati Beti. Okay, we accept the arguments of BJP for a minute. If we accept these arguments for a single minute, then also the question remains that you need not to ensure or protect Jati Mati Beti for AIUDF. You promised in the previous election to that you would protect the Jati Mati Beti for the Assamese people, and you totally failed. And you don't have any issue before this election, and that's why you are trying to divert the mind of the people by saying all these things. And for example, just 8 days ago, 8 days before of declaration of poll, the Home Minister come to Assam and inaugurate one project in Batadraba, the legendary personality of Assam. Can we have the right to raise the question that you didn't have any time in these 5 years to think about this legendary personality of Assam, the nation builder of Assam, Srimanta Shankardev? And just a day before the declaration of election, you come and inaugurate the scheme. The central government didn't have a single minute in these 7 years before this Assam election. So these questions are also being asked before the election by the people of Assam, and BJP has to answer this question. प्रमोद स्वामी जी जो कहना है AIUDF का कि जो भी कदम अभी जो अमित शाह, इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह बतद्रवा में आए थे, जस्ट एक इलेक्शन स्टंट है इलेक्शन से पहले, क्योंकि इससे पहले 5 सालों में, 4 सालों में, 6 सालों में कभी याद नहीं आई बतद्रवा की किसी भी बीजेपी के बड़े नेता को सेंटर से। देखिए 60 साल तक इनकी सरकार रही कांग्रेस की, इनको क्यों याद नहीं आई? गुरुजन की तो बात छोड़िए, हमारे यहाँ से डॉक्टर भूपेन हजारिका साहब थे, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले साहब थे, कांग्रेस की सरकार थी, क्यों भारत रत्न उनको नहीं दिया? हमारी सरकार ने तो इन नमस्य व्यक्तियों को, पूजनीय व्यक्तियों को हमारी सरकार ने सम्मानित किया। कांग्रेस के पास भी ये अपॉर्चुनिटी थी, कांग्रेस ने तो नहीं किया। तो इंजाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन काम करना काफी मुश्किल है। दूसरी बात, जहां तक सवाल उठा सांप्रदायिक राजनीति की, मैं हमारे AIUDF के जो मित्र हैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा
कि ये स्टेटमेंट तो हमने नहीं किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो 3000 मस्जिदें गिराई जाएगी, लोगों को अजान देने नहीं दी जाएगी। इस तरह की बातें कर करके यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? मैं चुनौती देता हूं बदरुद्दीन साहब को कि वो साबित करे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, कितनी मस्जिदें आसाम में गिराई, जरा आप बता दीजिए। तो जब एक भी मस्जिद नहीं गिराई तो आप लोगों को क्यों भड़का रहे हैं कि 3000 मस्जिदें गिराई जाएंगी? इसका मतलब हुआ कि ऐसी बात करके आप हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको गुमराह कर रहे हैं। आपने 60 साल तक उनकी चिकित्सा, उनकी शिक्षा के ऊपर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति के तहत हम काम कर रहे हैं। आज जो सबसे बड़ा जो इंडिया में जो ब्रिज बन रहा है वो धुबड़ी और फुलवाड़ी में ही बन रहा है। अगर हम वहां का डेवलपमेंट नहीं चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहते, तो हम डेवलपमेंट के काम क्यों करते? आज जो भी कांग्रेस या AIUDF के विधायक है, क्या वहां कई विधायक की पूंजी में कोई कटौती की गई? क्या उनके जो काम है डेवलपमेंट के उनमें कोई कटौती की गई? क्या उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस है क्या हमारे माइनॉरिटीज लोगों को नहीं मिली? मैं ये कहना चाहूंगा जो बेनिफिशियरी स्कीम आसाम में चल रही है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज हमारे माइनॉरिटी भाइयों को मिला है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ये रही है, तुष्टीकरण की राजनीति रही है, अपीसमेंट की राजनीति रही है। इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी we will come to that, Pramod Swami ji, we will come to that. Polarization दोनों ही पार्टी से हुई है, let's face it, दोनों ही पार्टी से हुई है। जो बिग टू पोलराइजेशन है, मैं सिर्फ 1 सेकंड लूंगा, सिर्फ 1 सेकंड में अपनी बात में कंप्लीट करता हूं, बाद में आप बोलिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है वो सबको लेकर के काम कर रही है। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से एक बात पूछना चाहूंगा कि 60 साल में आपने माइनॉरिटी इलाके में क्या किया? वहां न कोई स्वास्थ्य की सुविधा है, न चिकित्सा की है, न शिक्षा की है। वहां आपने क्या किया डेवलपमेंट के लिए? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और RSS का भय दिखा करके आप कितने दिन तक हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करेंगे? इस सवाल का जवाब आसाम की जनता आपसे चाहती है। NETRARANJAN Chaudhary, well, this debate can go on and on. Every election we have this debate. Just take a second. If you have clearly listened to his argument, he has clearly said, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. You can see this recordings, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है. I think this summarize the BJP's whole strategy कि भाई कुछ भी बोल दो लेकिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो राम भरोसे है, कुछ बहाना बना देंगे, या तो कांग्रेस के ऊपर ही छोड़ देंगे या तो पाकिस्तान को बोल देंगे। अभी लेकिन बोल के जाना है। सो यू हैव योरसेल्फ एडमिटेड कि कहना आसान है, करना मुश्किल बहुत है। मान लीजिए हम वही बोल रहे हैं कि बहुत आप लोग जुमला फेंकते हो लेकिन वो करना कितना मुश्किल है। चाहे आपको काला धन वापस लाना, अच्छे दिन लाना, आपका 16 मई की बात सारी बांग्लादेशी को भगा देना, कितने दिए आप फिगर तो दे दो भाई साहब। हाँ, साल में 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, फिर पकोड़े बनाने के लिए बोल देना, तो वही है आपका बात कि कहना आसान है भाई साहब, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बार बार ये पुराना खेल आप यहाँ पे मत करिए। और ये जानबूझ के बार बार आप जो रिलीजियस पोलराइजेशन की बात कर रहे हो, वी आर एक्चुअली अवॉइडिंग। हम बार बार घुमा के आपको बोलेंगे आपका विजन डॉक्यूमेंट के क्या हुआ, आपका अच्छे दिन कहाँ गायब हो गया, आपका विकास कहाँ गायब हो गया। कांग्रेस ठीक है, आप तो बोल रहे थे ना 7 साल में जो हम 7 महीने में कर देंगे। अभी की आर्गुमेंट थी भाई साहब, ये सब कहाँ है आप वो बोलिए। आप रिलीजियस आर्गुमेंट छोड़िए, इस बातों पे बोलिए, मुद्दों पे बात करिए। Coming to that very quickly, अब हिम्मत नहीं है बोलने की, हुज्जत अब फिगर लेके आइए ना भाई साहब, फिगर लेके well, this can continue. We are running short of time. NETRARANJAN Chaudhary, what the Congress and AIUDF has been saying continuously is that removing BJP is a priority right now. But what is that which you are bringing to the table for the voters this election? Nobody is talking of at least we have to give it to the BJP central leadership. Whenever they are coming, they are talking about development. At least they are talking about it. The Congress and the AIUDF are not even talking about it. They are only talking about BJP. So do you have a vision document? What do you bring to the table? Okay, well, bring us back to power. We have these plans for the state. At least say something. Okay, see. As Pramod Swami said, कहना आसान है, करना मुश्किल है. But बोलिए तो आप तो बोल भी नहीं रहे. I totally agree this point. See, there are two things. There is one top-down approach and there is one bottom-up approach. What BJP does is that Man Ki Baat, they will just throw their vision on people that I want to do this for you. They don't want
what is Jan Ki Baat. Forget about Okay, what the now BJP what is you're doing- saying. no, What no, are you going to do? probably- Mohiuddin probably- Siddique, no, what no, is probably in very what is the next- AIUDF's probab- plan to develop no, the no, state? probably We very are only soon talking we are- about we what are- will happen if the BJP Just comes one back second, to please. power. We are talking to the grassroots level people, we are talking to voters, we want to know their aspirations. Ka is definitely top agenda, we are totally against it. We will definitely repel this car. So this is definitely top of this agenda, and also we are talking to people, and our agenda will be bottom up approach. It's not like Mann Ki Baat will impose on the people and we will not able to fulfill their aspirations. We are talking to them, and hopefully maybe in next show itself we will be able to provide you what is our vision and all. So this is definitely well researched bottom up approach, not like jumlas. See, it's really easy to give some jumlas ki I will give every youth of Assam a Harley Davidson, or I'll take you to this and that. So this is easy to give some false promises, but when you are really serious, it takes time to drill down, you to talk to people. So definitely we'll provide you the our narrative very soon. Mohiuddin Siddique, can we also expect the AIUDF to come up with a few points, development points, which the party promises to the voters this election? People, of course, are looking for development also, not just the politics of fear. See, everyone knows in this state that, or in this country, that we are not such a party who alone can form a government, and we know our position, we know our strength. Then after also, we are also having a very clear vision that some economic or some other developmental issues will go with this force, which will not repeat it again and again. Whatever is being done by BJP government now, and first of all, we don't these things to be repeated. For example, the farmers are not being listened since long. They are agitating against That is okay. Let's talk about Assam. Farmers Let's talk about Act. Assam. Of course, Assam's The- farmers too. Let's talk about Assam-centric, Assam post-centric very quickly. The same thing can be repeated. The same thing can be repeated in case of Assam also. And the farmers of Assam are not isolation with the farmers of this country. And there should be a clear policy in the field of agriculture, in the field of creating employment generating alternative sectors, and BJP don't have such type of policies and activities in these 5 years, and BJP totally failed to create the employment, developing the alternative sectors. For example, Choudhary's capitals, crafts, Swalkusis. This government didn't single attention towards these alternative sectors, fishery, agriculture and all. And rather than they tried. So the probably whole we can 5 years expect some in promises on dividing that people front in the from name your of party devotion. going to the polls. To ensure, let me finish. First of all, to ensure development in the state, the restoration of peace and harmony is must, and that's why we'll give priority to this, and then after we'll take all policies which can bring the development in these alternative fields where employment can be generated. NETRARANJAN Choudhary, my last question to you. Well, let's be honest. As a party, don't you feel it's also high time the central leaders, the big leaders, the top leaders, the Rahuls and the Priyankas also visit Assam, make the people of Assam feel that the Congress high command, the leadership is with the state? I know your answer would be our state leadership is capable enough, but that is not the point. Point is the central leadership also connected to the state, to the people of the state? Don't they have a responsibility towards the people of this Assam as well this election season? Don't you think the frequency of visits should increase? Well, I would say, are you asking that Dhoni to come to the opening batting just because they are chasing a run? He is very safe at playing at number 7, and he will be come down. No, we are not tired, talking about showmen. We are Yeah. not talking about No, Dhoni. We are actually- not talking about no, entertainers. We are talking about leaders who want to serve the people. No, they are very much in touch with all of us. They are very much concerned about people. They are definitely visiting. But then, whatever decisions we are taking is
with taking confidence into a central leadership. It's a well thought out strategy and well thought out process. So, and most important thing, our cadres morale is really high. It's not like that they are abandoned to fight their own battle. It's not like that. At the same time, we are not at all nervous like BJP. See, now 2014, Modi's image was like a Vikas Purush. That itself spoke a lot. Let me tell you very honestly. But now more and more he comes. Whenever people see certain questions comes to their mind, we don't have to remind them, and it's good more if more he comes and more the central leaderships comes, those questions will come again and again. Point taken. Point taken. At least they are coming. At least they are coming. At least they are coming. At least they are making some noise. Because they have to. At least they are coming. At least they are making some noise. To, Pramod Swami. Last words. कैंपेनिंग के मामले में बीजेपी आगे दिख रही है. क्या सीट शेयरिंग के मामले में सब कुछ सेट है एज फार एज योर एलाइज आर कंसर्न्ड, या फिर कोई ड्रामा बचा है? बहुत जल्दी जो हमें पता चल जाएगा. बट क्या सारा जो है, इज इट ऑल सॉर्टेड विद इन द अलायंस, द बीजेपी लेड अलायंस? वेरी क्विकली, 30 सेकंड्स. हमारे जो गठबंधन के पार्टनर है हम उनके साथ में मिलकर के चुनाव में लड़ेंगे. जहां सीट एडजस्टमेंट की बात है या सीट शेयरिंग की बात है, तो वो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है स्टेट लेवल का और केंद्र लेवल का, वो बैठ के बातचीत करके इसको सॉल्व कर लेगा. ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो मेन इश्यू है, जो मेन एजेंडा है, वो ये है कि 2021 का चुनाव जो है असम की दशा और दिशा को तय करेगा. तो इसलिए हमारा जो मूल लक्ष्य है कि कांग्रेस और बदरुद्दीन साहब के बीच जो नापाक गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन को हम जो दीसपुर की सत्ता से 500 किलोमीटर हम दूर रखेंगे. तो हम नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन. आप ये हम सुन चुके हैं. बट let's gear up for a very exciting election, and let's hope that the Congress AIUDF campaigning also picks pace and we get more masala in our shows in the days and weeks to come. Thank you so much, Pramod Swami. Thank you so much, Mr. NETRARANJAN Choudhary and Mohiuddin Siddique, for joining me on Bottom Line.